फ्रेंड्स, वेलकम टू एनी नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 सिलेबस के बारे में। ये पेपर 1 इट इज़ फॉर क्लास 1 to क्लास 5 प्राइमरी स्टेज के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका डिटेल सिलेबस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे जाके जो सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबा के और पास में जो बेल आइकन है इसको दबाइए। इससे आप लोगों का पेपर क्वेश्चन सोल्व पेपर और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो पेपर 1 है ये क्लास 1 to क्लास 5 प्राइमरी स्टेज के लिए होते हैं और यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स रहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं वो फर्स्ट में 15 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 5 क्वेश्चन और उसके बाद 5 क्वेश्चन, उसके बाद 10 क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट पार्ट लैंग्वेज 1 में भी टोटल 30 क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट बी 15 क्वेश्चन। और लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 2 पार्ट है 15 करके। उसके बाद जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 पार्ट है 15 क्वेश्चन। ये सब डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट में होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके बाद सेकेंड पेपर। ठीक है दोस्तों, पहले से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे सेल डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेल डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा जो सीटेट एग्जाम होगा वहाँ पे। और फर्स्ट पार्ट में होता है 15 क्वेश्चन, सेल डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस ऑफ heredity and environment, socialization process, social world and children, teacher, parents, peers, Piaget, Kohlberg and Hygostock, construct and critical perspectives। ये 3 थ्योरी का मतलब जिसने डिस्कवर किया उसका नाम है। कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रेन centered and progressive education, critical perspective of the construction of intelligence, multidimensional intelligence, language and thought, gender as a social construct, gender roles, gender bias and educational practice, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. Distinction between assessment for learning and assessment of learning. School-based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice. Formulating appropriate question for assessing readiness levels of learners, for enhancing learners and critical thinking of classroom, and for assessing learner achievement. From this part 15 question will be there in the CTET examination. Next part B, from this part 5 question will come. Concept of inclusive education and understanding children with needs, addressing learners from
diverse backgrounds including disadvantage and debrief, addressing the needs of children with learners difficulties, impairment, etc., addressing the talented, creative, especially able learners। यहाँ से 5 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है यहाँ से 10 क्वेश्चन रहेगा, लर्निंग एंड पेडागोजी। दिस पार्ट से 10 क्वेश्चन रहेगा। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल to achieve success in school performance, basic process of teaching and learning, children's strategies of learning, learning as a social activity, social context of learning, children as a problem solver and scientific investigator, alternative conceptions of learning in children, understanding children's errors and significant step in the learning process, cognition and emotions, motivation and learning, factors contributing to learners' personal and environment. Second part, language 1. From this part 30 questions will be there. First part language comprehension, reading ancient passages, 2 passages, 1 prose and or drama, 2 passages, 1 prose and or drama, and another one is 1 poem with questions of comprehension, interference, grammar, verbal ability, etc. And from the next part 15 question, pedagogy and language development. This part contains learner and acquisition, principles of language teaching, role of listening and speaking, critical perspective of role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, etc. This syllabus is taken from the official website, so don't worry, all questions will come from this syllabus. Next part is language 2. From this part also 30 questions. Here also to another section. First one is comprehension, 15 questions. 2 unseen prose passages. And with questions on comprehension, grammatical or verbal ability. And next part, pedagogy of language development. Here also 50 questions come from this part. Okay. Next part is mathematics. It is very important. From this part also 30 questions come. Here also 2 sections. First one is content 15 questions, and next part is pedagogical issues. From here also 15 questions. Okay, the first part it will contain geometry, shapes and spatial understanding, solid around us, numbers, addition and subtraction, multiplication, division, measurement, weight, time, volume, data handling, patterns, money, etc. From this part 15 questions will come, and next section from here also 15 questions will become. Okay, please read it and follow the syllabus. Last part, that is environmental studies. Here also 2 sections, 15
Content 1. It contains family and friends, relationship, work and play, animals, plants, food, shelter, water, travel, thing we make and do. This is first part, and next part is pedagogical issues. From here also 15 questions come. Concept and scope of environmental science, significance of environmental science, integrated EBS, environmental studies and environmental education, learning principles, scope and relation to science and social science, discussion is CEC, teaching material, age problems. Okay, this is the total syllabus for paper 1, that is class 1 to class 5. Thank you friends for watching the video. If you like the video, please subscribe my channel.